This is a satellite image of a secret submarine base that China is building in Bangladesh. Damien Simon posted the image on X showing submarine piers, oil depots and a dry dock. It appears that the base is in advanced stages of completion. China is building the new naval base for Bangladesh in Cox's Bazar. बांग्लादेश के अंदर बनने वाला सबमरीन बेस भारत के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। भारतीय मीडिया भी बहुत ज्यादा परेशान है कि चाइना के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बेस बनने जा रहा है और भारत का मीडिया काफी ज्यादा परेशान है। भारतीय हुकूमत काफी ज्यादा परेशान है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के साथ दोस्ती कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो बांग्लादेश के अंदर बकायदा सबमरीन बेस बनाने जा रहा है, जिससे भारत काफी ज्यादा खौफजदा है। भारत क्यों खौफजदा है? बांग्लादेश से खौफजदा है या फिर चीन के इस बेस से? चीन का जो बेस है वो बांग्लादेश में बिल्ट होने जा रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के अंदर बनने वाले इस सबमरीन बेस से क्यों खौफजदा है और क्यों इस तरह की प्रोपेगेंडा, इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है? तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 go. In what comes as a huge shock for India's defense and security, this is a satellite image of a secret submarine base that China is building in Bangladesh. Damien Simon posted the image on X showing submarine piers, oil depots and a dry dock. It appears that the base is in advanced stages of completion. China is building the new naval base for Bangladesh in Cox's Bazar, situated not far from the Indian Navy's Eastern Command headquarters in Visakhapatnam. So will the Chinese submarines have access to this facility as Bangladesh betrayed India's trust by granting access to China? And will China use this base in Bangladesh to snoop on its biggest regional rival India, just like it does in Sri Lanka and Maldives? According to reports, the construction of the facility known as BNS Sheikh Hasina began in 2020. It was formally inaugurated in 2023 in the presence of Bangladesh Prime Minister and a delegation of Chinese officials along with PLAN or Chinese Navy officers. Spread nearly over 2 kilometers, the facility can reportedly house up to 6 submarines and 8 warships simultaneously. Interestingly, Bangladesh currently has only 2 Ming-class diesel-electric submarines supplied by China. So, what are the extra submarine docks for? Will Bangladesh allow Chinese submarines into India's backyard? Reportedly, during the official inauguration of the naval base, Sheikh Hasina declared that it would be a waypoint for ships sailing through the Bay of Bengal, suggesting that Chinese submarines and warships may get logistical access for service and replenishments. This would be bad news for India, as China could permanently station some of its assets right on India's doorstep, which could easily spy on India's naval movements and strategy. So the question arises, why did Bangladesh allow it? More importantly, did India raise any objections or did Bangladesh ignore them? While it is within Dhaka's right to lean on China for the construction of the naval facility, which cost $1.2 billion, it probably wasn't the right decision for India's defense, its strongest ally, and a nation that went to war in 1971 to save Bangladesh and its people from Pakistan. India's own secret nuclear submarine base is located in Rumbili, just 50 kilometers from Eastern Command HQ in Visakhapatnam and well within the radar of Cox's Bazar in Bangladesh. Some have termed this Chinese strategy of constructing naval bases with the promise of logistical access as, quote, submarine diplomacy. China is building a similar facility in Cambodia, which raised alarm bells in the US as well. China is using its financial clout, easy loans, in return for greater access for its naval forces in the Indo-Pacific. However, trouble also remains for countries like Bangladesh, who risk falling into a Chinese debt trap, just like Sri Lanka. The Chinese strategy is well thought out and has caught its biggest rivals, India and USA, on the back foot. New Delhi and Washington are countering this by increasing military and diplomatic support for friendly nations in the South China Sea, including the Philippines and Vietnam. So have your say. How can the Indian Navy counter China's increasing footprint? तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि सीक्रेट तौर पे बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बेस बनना भारत के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है और भारत इससे खुश नहीं है। आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी बांग्लादेश के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं,
हमेशा भारत इससे नाराज रहा है, हमेशा भारत इससे खुश नहीं रहा, हमेशा बांग्लादेश की तरक्की से जलता रहा है, हमेशा बांग्लादेश को तरक्की करता नहीं देखना चाहता हिंदुस्तान। अगर बात करें पद्मा ब्रिज की, तो इससे भी भारत खुश नहीं था, क्योंकि चाइना ये बना रहा था, चाइना बांग्लादेश की मदद कर रहा था। बांग्लादेश के अंदर बनने वाला रूपर पावर प्लांट, इससे भी भारत खुश नहीं है, और इसीलिए भारत के जासूस, रो के एजेंट यहां से पकड़े जाते रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदर तकरीबकारी करने के लिए आते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर चाइनीज को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। और अब भी बांग्लादेश से खुश नहीं है भारत इसलिए खुश नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना मिलकर सबमरीन बेस बना रहा है और बांग्लादेश की ताकत बढ़ रही है, तो इसीलिए भारत अब बांग्लादेश से खुश नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।